Okay, good morning everyone. As we have started our third chapter and अभी last topic ही बचा है जो था अपना टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, राइट? सो टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था. सो टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन का ये डायग्राम भी हम लोग ने देखा था. सो अभी ये लेक्चर में हम लोग टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो देखते हैं, ठीक है? सो ठीक है. सो टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन इज नथिंग अबाउट, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था like we need to document each and everything for our record purpose, because in the future, uh, whenever module uh, means we have to replace one module, and at that time we need to go through on our previous documentation. So obviously for that we need the proper documentation, and not for only the future use but for current use as well. So the documentation is the good practice. It is the essential things in each and every management spectrum. So we can say that not only in the software engineering, in each and every field, we document the thing which we had do, okay, which we had perform. So these are the phases. So one by one हम लोग देखने वाले हैं कि documentation में क्या क्या होने वाला है, ठीक है? So first is test scenario. Okay, so it is a document that ये ignore करो, this is add. So it is a document that defines the multiple ways or combinations of testing the application. Means it simply says that you can test this individual application on a different ways, like using the JavaScript, using the Python. ये मैं for example बोल रहा हूँ. You can say that you can test the software on Windows 7, Windows XP, Apple Mac पे चला सकते हो आप लोग, then Linux. Okay, so there are the destination, the goal of our software testing is only one, but to perform this testing strategy having the different scenarios. So generally it is prepared to understand the flow of an application. Okay, it does not consist of any inputs and navigation steps. Okay, so scenario means क्या है, हम लोग बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं बहुत सारे वेज से, बट it is prepared to understand the flow of an application. Okay, internal structure of an flow मतलब कैसे वो work हो रहा है, and it does not consist any inputs and navigation steps. Okay, then the next is test case. So as I said earlier a lot of many times that ki, uh, whenever you are dealing with the software testing, you may need to create proper test cases. Okay, and you have to perform those each and every test cases for your betterment of software testing. So it is an in it it is an in details document that describes step by step procedure to test an application. It consists of the complete navigation steps and inputs and all the scenarios that need to be tested for the application. Okay, so we will write the test case to maintain the consistency, or every tester will follow the same approach for organizing the test document. So in a simple word, we can say that this is the checking criteria of each and every test scenario, each and every test activity in our entire software document, right? So test case is the main purpose of software testing. Means depending on the successful test cases, we can say that the next is test plan. So plan is a document that is prepared by the managers or test lead. Okay, means higher authority will create this document, and it consists of all information about the testing activities, uh, and it consists of multiple components such as objectives, then scope, then approach, then environment, then methodology, टेम्पलेट, देन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सारी चीजें हम लोग ने ऑलरेडी देख ली थी. टेस्ट प्लान क्या है एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग. आई गेस नेक्स्ट यूनिट उस पर ही डिपेंड है. सो टेस्ट प्लान मीन्स इट इज अ डॉक्यूमेंट विच टेल्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट 2 years. मतलब जितना ड्यूरेशन है उतने टाइम में हम लोग क्या करने वाले. सो ये सारी एक्टिविटीज उसमें कंसिस्ट हो रही है. दैट्स इट. ओके, देन द नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. So RTM is another kind of document which ensures that all the test cases has been covered. Means we ensure the customer that we check all each and every activity, each and every test cases
means there is no any left test cases which have to be tested, which have going to be performed. Okay, we ensure that the customer, we test the entire software module from top to bottom, from 0 to infinity. Okay, so this document is created before the test execution process, और obviously ये जब हम लोग टेस्ट एग्जीक्यूशन मतलब टेस्ट केस बनाने वाले हैं और उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उसके पहले हम लोग ये क्रिएट करने वाले, टू वेरीफाई दैट वी डिड नॉट मिस राइटिंग एनीथिंग केस फॉर द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट. सो हम लोग कुछ मिस नहीं कर रहे टेस्ट केस में, ये इंश्योर करने के लिए वी राइट दिस बिफोर द actual execution of test cases. Okay, okay, then the next is test strategy. So it is a high level document which is used to verify the test types to be executed for the product, and also describes that what kind of techniques has to be used and which model is going to be tested. So strategy is nothing about the best way amongst several. Strategy मतलब मैं कोई भी एक काम कम टाइम में और बहुत ही इफेक्टिव ऐसे कैसे कर सकता हूँ, दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी. सो यही ये लाइन बोल रहा है, एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर कैन प्रोवाइड इट, मीन्स प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट स्ट्रेटेजी, या फिर द पर्सन हु बिल्ड्स द या फिर इम्प्लीमेंट्स द टेस्ट स्ट्रेटेजी इज प्रोजेक्ट मैनेजर. सो इट इंक्लूड्स द मल्टीपल कंपोनेंट्स सच एज डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट, कैसे होना चाहिए उसका फॉर्मेट डॉक्यूमेंटेशन का, देन ऑब्जेक्टिव, ओके, देन प्रोसेसेस, ओके, उसके बाद स्कोप, customer communication strategy, etc, etc. So we cannot modify the test strategy. So it is the we can say that we commit the means we generate the test strategy and then we commit the strategy. We cannot do the changes after the implementing individual test strategy. Okay, then the next is test data. So it is a data that occurs before the test is executed. So obviously ये before ही होने वाला है, थोड़ा टेक्निकल टर्म है बट मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो. लाइक अगर आपको टेस्टिंग करना है, सो टेस्टिंग के लिए कौन सा डेटा चाहिए, वो अगर डेटा ही आपके पास नहीं है, सो यू कैन नॉट टेस्ट दैट इंडिविजुअल मॉडल, राइट. सो ये लाइन वही बोल रहा है कि डेटा क्या है, डेटा एक ऐसी चीज है दैट अकर्स बिफोर द टेस्ट इज एग्जीक्यूटेड. ऑब्वियसली you need that data to implement the actual execution of software testing. अगर वही नहीं है आपके पास तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है. So it is mainly used when we are implementing the test case, क्योंकि test case is the heart of our software testing. So obviously at that time, और test data क्या है मैं बोलता हूँ आपको. Suppose you have to test the login page. Okay, so for the login page the test data is your username, योर पासवर्ड, देन लॉग इन बटन या फिर फॉरगॉट पासवर्ड, जो कुछ रहेगा वो, दैट इज अवर टेस्ट डेटा. सो मोस्टली वी विल हैव द टेस्ट डेटा इन द एक्सेल शीट फॉर्मेट एंड एंटर्ड मैन्युअली व्हाइल परफॉर्मिंग द टेस्ट केस. सो यूजर नेम मैन्युअली मुझे एंटर करना पड़ेगा, जो कुछ रहेगा वो पासवर्ड उसका मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा, ये यूजुअली उसकी टेस्टिंग है. सो द टेस्ट डेटा कैन बी यूज्ड टू चेक द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एंड इट इज यूज्ड टू चेक द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. मीन्स मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर है, उसने साइन अप किया है, मतलब उसका यूजर नेम और पासवर्ड मेरे पास स्टोर है, राइट. सो नाउ मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है कि वही यूजर लॉगिन कर रहा है कि नहीं. ओके, मतलब क्या, एक्सपेक्टेड रिजल्ट मेरे पास है एंड नाउ आई एम क्रॉस चेकिंग द current scenario with this expected one. So obviously to do that I need the test data. Okay, so which means that when the test data is entered, the expected outcome will meet the actual result, and after that they will throw the error या फिर throw the home page, successful home page. Okay, then the next is bug report. So a bug report is a document, means ये सारे documentation ही हम लोग बना रहे ना. So it is another kind of document, bug report, where they maintain a summary of all the bugs which occur during the testing process. मतलब जितने भी error, bug मतलब क्या, error, fault है. So जितने भी errors, faults occurred हुए हैं during the execution of testing, so that all bugs are going to be covered, are going to be stored, are going to be reported in this bug report document. Okay, so this is a crucial document for both the developers and test engineers, because with the help of bug reports they can easily track the defects, report the bug. Means suppose कुछ minor defects, minor errors फिर से आ रहे हैं at the time of deployment,
So using the bug report, I can track those bug and fix them at that individual point. So यही सारी चीजें करने के लिए मुझे obviously bug report चाहिए. Okay, and the last is टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट मीन्स जो हम लोग ने पूरा अभी टेस्ट एग्जीक्यूट किया, टेस्टिंग एग्जीक्यूट किया, उसका रिपोर्ट. सो इट इज द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय टेस्ट लीड्स आफ्टर द एंटायर टेस्टिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड. ओके, पूरी प्रोसेस होने के बाद ही मैं ये करने वाला ऑब्वियसली. And the test summary report defines the constancy of the product, and it contains information like the modules, the number of written test cases. Means test summary report is nothing about the summary of the testing, and test execution report is nothing about the entire execution process of testing. Okay, I hope you will get the idea, the difference between test execution report and test summary report. Okay, so do not get confused between these two things. Those two are totally different. Okay, so we cover all the documentation module in the test documentation scenario. Okay, अभी उन लोग ने दिया है कि ये जरूरी क्यों है, मतलब why documentation is needed. So if the testing or development team get software that is not working correctly, मतलब वो टेस्टिंग टीम को मिले या फिर टीम डेव्हलपमेंट टीमला मिळणार. ओके, जर सपोज माझं सॉफ्टवेअर वर्क होत नसणार, देन अँड डेव्हलप बाय समवन एल्स, किंवा ते दुसऱ्या कोणीतरी बनवलेलं असणार. सो टू फाइंड द एरर द टीम विल फर्स्ट नीड अ डॉक्यूमेंट. सो ऑब्वियसली जैसे कि आपने मोबाइल लिया, so in this mobile, suppose the SIM slot, there is a fault in the SIM slot. Okay, so you first need to check your मैनुअल जो आप लोग ने दिया है वो आप लोग चेक करोगे, राइट. सो दैट मैनुअल इज नथिंग अबाउट आवर डॉक्यूमेंटेशन, या फिर आप लोग साइट पे जाओगे वहां पे ट्रबल शूट करोगे कुछ, तो गूगल पे सर्च करोगे, दैट इज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, सो but if the documents are not available, then the tester need to do a black box and white box testing again. Means अगर नहीं है डॉक्यूमेंटेशन, सो मुझे एक बहुत बड़ा हेक्टिक टास्क या फिर बहुत बड़ा लेंदी टास्क फिर से परफॉर्म करना होगा. एंड आई कैन नॉट अफोर्ड एज अ सीईओ, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर मेरी खुद की कंपनी है, सो आई कैन नॉट अफोर्ड दिस थिंग, राइट. इतना सारा पैसा मैं फिर से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, that is not the good way. So which will waste the time and money of the organization. Obviously मेरा वहां पे टाइम जा रहा है और पैसा भी जा रहा है. So more than that, lack of documentation becomes a problem of acceptance. Okay, so I hope you will get the idea कि हम लोग ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मॉड्यूल सॉफ्टवेयर बना के कुछ फायदा नहीं है. वो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आपको वो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करना होगा, राइट. ओके, सो यहाँ पे उन लोग ने एग्जाम्पल दिया है. Let's take a real-time example of Microsoft. Microsoft launch every product with proper user guidelines and documents. Means अगर Microsoft अभी 80 चल रहा है और सपोज माइक्रोसॉफ्ट ने अभी विंडोज 10 इम्प्लीमेंट किया, सो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और यूजर गाइडलाइन के बजाय वो रिलीज करने ही नहीं वाले. ठीक है, विच आर वेरी एक्सप्लेनेटरी, लॉजिकली कंसिस्टेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यूजर. आप लोग गूगल कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी डॉक्यूमेंट, यू विल गेट द आइडिया. ठीक है, यहाँ पे बेनिफिट्स और वो ड्रॉबैक्स दिए है, दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट. सो आई होप you will get the concept of testing documentation, which is the last topic in our chapter 3. Okay, so our next unit is all about the software project estimation. From the next lecture we are going to start this unit 4th, and that is all about the estimation means अभी ये बहुत ही easy टॉपिक है, and इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, so वो हम लोग फिनिश कर देंगे यही हफ्ते में. Okay, so in the next lecture we are going to start the software project estimation in software engineering process, right. Thank you.